Assalamu alaikum. In this video, I will tell you how to resolve Elementor 500 error. तो इसके लिए बेसिकली इसमें वजूहात तो इसकी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, मल्टीपल होती हैं, काफ़ी ज़्यादा नहीं मल्टीपल होती हैं। और इसको हम रिजॉल्व करने के लिए जो अभी तक मैंने जो मेथड ऑब्जर्व किया है जो कि ज़्यादा रीज़नेबल है, उसके लिए हमें एक प्लगइन रिक्वायर्ड है। तो प्लगइन में हम जाते हैं, तो हम यहाँ पे प्लगइन में आए और प्लगइन में हम लिखेंगे WP ऑप्टिमाइज, ठीक है। ये वाला प्लगइन बेसिकली हमें रिक्वायर्ड है और इसको हम करेंगे। तो इफ आई गो टू द प्लगइन्स इंस्टॉल प्लगइन्स, गो टू द डाउन एंड ओपन ऑप्टिमाइज, WP ऑप्टिमाइज क्लीन कंप्रेस कैशे optimize, tap on optimize and loading data. Make sure you are on the database page or check mark clean all post revision. Clean all post revisions मीन अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि ये है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, पब्लिश, आई एम फेसिंग द एरर Elementor 500 error, server error 500. Okay, the reason is tap on 3 lines, go to the history, revisions. These all the revisions. That's why we are facing this issue. Basically, we need to clear these all revisions. Go back to the clean all post revision. Run optimize. Tap on this one or just tap on this. Run optimization completed. Go back to the Elementor page builder and save it. Publish. Here we go. We have published. We have cleared the वीडियो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है, मेक श्योर लाइक जरूर करना है और आपने इसको सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।